Good morning, everyone. Any questions from what we discussed yesterday? Hello, am I audible? Yes, good morning. Okay. Okay, so in case no questions, yeah. So I think we completed this investment income. So next is of extraordinary items. Now, what do you mean by extraordinary item? Extraordinary item is something which is non-recurring. Okay. Either non-recurring or one of the items. So the this current pandemic is an example of this extraordinary item. Okay, so in this, these are those items which are exceptional item, but still are material enough to have an impact on the business. So now in terms of uh, modeling for these, again, if you have a pattern, then you try and use those historical average to estimate this. But if you do not have pattern, for example, this pandemic scenario, if you look at the last 10 years, 15 years data for a particular company and you do not have this scenario coming in the past 10 to 15 years, so how would you be able to forecast, okay, next 5 years, 20 years में दोबारा होगा? Okay, so probably we'll assume it to be nil, considering as one of the items, and rather than wasting time in trying to forecast, okay, next pandemic कब होगा, उसका क्या impact होगा. The other example could be an earthquake. So, for example, countries like Japan, uh, there are certain locations in Japan which where the earthquake is very common. It comes at a comes on a very recurring basis. So what happens is, because of that, there is a damage or a maintenance required in a building and infrastructure around that. So those expenses, when we are working on those for those clients who have their production or have their plants in those zones, we take those earthquake as a not an extraordinary item because we see the historical average और उससे forecast करते हैं. But if you're looking at some other countries or some other zones where earthquake बहुत recurring नहीं है, we take this as an extraordinary item. We don't try and
फोरकास्ट कि अच्छा earthquake कब आएगा, कितना डैमेज होगा and stuff like this. Okay, so if it is an extraordinary item, the next is, do you have a pattern or not? अगर हाँ, you use that pattern to forecast. If you do not have that pattern and it is one off, you ignore and move on. Any questions? Regarding Japan earthquake, you gave as an example, that is not to be considered as an extraordinary item because of the pattern, because it is regular there. But that is what the pattern is. No, it is still an extraordinary item, but this extraordinary item I would still be forecasting because I have a pattern. It is So not it that would be because considered. it is not that because I have a pattern that would be considered as non-extraordinary item. It's still an extraordinary item because it is outside your control, correct? Yes. Okay. But because I have a pattern, I would be doing modeling around that, basis that pattern or historical average. Case 2, if I do not have the pattern for the same event, then I will assume nil and move on. Okay. Any other example besides natural calamities? Most of these would be in the natural calamities. अभी पेंडेमिक है, अब आप इसको नेचुरल कैलामिटी है कि ये मैन मेड है, आप आई लीव दैट judgment to you, but this is another example. Yes, this is though, of course. Of course, this is man-made or natural. No, this is extraordinary item. But this is a natural or man-made? This is man-made. Initiated by humans only. Okay. ठीक है. So this is a big debate, right? So let's not get into it. What about the catastrophic event of 2007? वो भी सब इसी में आएगा ना. Well, it's not a natural calamity. Doesn't make It's a man-made difference. calamity. It is not कि, for example, let's assume किसी कोई theft हो जाता है. ठीक है. Now theft is again a man-made. But can I forecast the theft? If the answer is no, I can't. तो then नहीं करूंगा मैं. But let's assume हर एक साल में एक theft हो रहा है. Let's assume that. And then I can see a pattern. Yes, on an average, every 1 year there's a loss because of the theft. And I will try and use that pattern to estimate. Okay, let's keep a provision कि हर एक साल में कुछ ना कुछ नुकसान और loss हो जाता है on account of factors like theft. So it's not whether it's a natural or man-made. It's not driven too much from that side. It's that event which is happening. Is there a pattern to that or not? अगर हाँ, so I will use that pattern to estimate for the next few years. If there is no pattern for that event, I will not waste time and say, okay, because it's an extraordinary item and there is no pattern, I will assume it to be nil. And let's not try and estimate that individual item. That is what the slide is trying to explain. Means we need not to go for any if this extreme value event. Yeah. उसका तो कभी पैटर्न होगा ही नहीं. ना पैंडेमिक का पैटर्न होगा, ना 2007 का पैटर्न होगा, ना एनरॉन वाला पैटर्न होगा. Nothing will happen because we cannot. In that case, we should not do that because ऐसे events का कोई पैटर्न नहीं होगा कभी. Correct. कैसे करोगे आप? अब let's assume suppose pandemic का ही बात करते हैं सर. Let's assume अब आप
पेंडेमिक खत्म हो गया, अब आप फोरकास्टिंग कंपनी कर रहे हो, तो आप उसमें पेंडेमिक फोरकास्ट करोगे दोबारा कि पेंडेमिक कब आएगा? No, 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 not in that sense. Then this thing is what I can say that it's not relevant for that. If you are doing हाँ, modeling, then it's not relevant. ऐसा नहीं बोलूंगा रेलेवेंट, बिकॉज रेलेवेंट का मतलब हो गया कि वो चीज इम्पैक्ट नहीं करी। आई नो अगर फ्यूचर में पेंडेमिक आया, so this will have an impact on this company or particular stock for which you're doing analysis, so it's applicable. But because I do not have a pattern, and this is something which is kind of an extraordinary item, that is why I'm assuming it to be nil. As we can say, this is an event which has coming as a pattern, like in our coastal states, frequently in every year there is a coming it's heavy floods and all that. हाँ, तो फिर मैं कंसिडर करूंगा। Same examples, correct? The earthquake wala. So, for example, we're looking at certain zones, certain countries, or certain centers वहाँ पे काफी रेगुलर आता है, so वहाँ पे हम ले रहे हैं। सिमिलरली फ्लड्स का है, कुछ कोस्टल एरियाज हैं जहाँ पे रेगुलरली फ्लड्स आती हैं, तो उसके 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 अकाउंट पे जो डैमेजेस होते हैं, जो मेंटेनेंस होते हैं, वो रेकरिंग हो जाते हैं, तो वो लेंगे आप। So let me give another example. जैसे दिल्ली है, so दिल्ली में मोस्ट ऑफ रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शंस जो हैं, ठीक है, स्पेशली दिस पार्ट ऑफ द ईयर, around December, because around this part of the year, especially in the northern part, especially in Delhi NCR, the level of pollution goes up, level of air pollution goes up, uh, because the states like Punjab, Haryana, uh, this is a season where the farmers are changing their cultivation. So the one of the traditional or easiest way to change that cultivation is to burn the residue of the previous cultivation. So when that happens, so there is a smoke or there is a pollution that's created because of that, and because of the wind movement, it comes towards the Delhi side. Okay, that's the reason why you see too much of smoky or kind of in that hazy environment on certain days. ठीक है, and because of the cold weather, वो environment में ज़्यादा sustain करता है, it doesn't evaporate so easily. ठीक है, so most of the time the Delhi government comes out and bans the construction work in around that part of the year, which creates a significant damage for the real estate and construction companies. Close to 1 year, 1.5, close to 1 month or little more than that, वो कंस्ट्रक्शन को शट डाउन करना पड़ता है। सो जो भी कंस्ट्रक्शन उस एरिया में चल रही होती है, उसको स्टॉप कर देते हैं। सो विच मीन्स देन क्रिएट्स एन इम्पैक्ट करेक्ट इन टर्म्स ऑफ आपका जो भी लॉस होता है। तो when we're doing anything around those pieces, and a company who has a significant real estate construction or projects going in that area, तो हम उसको रेकरिंग करते हैं, क्योंकि वो ऑन एन एवरेज एवरी ईयर का पैटर्न होता है। तो अगेन सेम एग्जांपल, बट अगर किसी और स्टेट में है, कहीं पे गवर्नमेंट ने वन ऑफ कंस्ट्रक्शन बैन किया है, तो उसको हम रेकरिंग करके वी डोंट ट्राई एंड एस्टिमेट अराउंड दोस पीसेस। तो it's all about the average and the recurring pattern, whether you have a recurring pattern or not. Any other question on this?
Okay. Next is the forex impact. So first is transaction exposure. So what do you mean transaction exposure? So forex is foreign exchange. I think we've discussed this earlier. So let's assume if you're doing exports और $100 का एक्सपोर्ट किया आपने, अगर एक्सचेंज रेट $1.50 INR है, so the exports would be 100 into 50, ये 5,000 INR का सेल्स हो जाएगा. बट यही अगर एक्सचेंज रेट, ये एक्सचेंज रेट अगर 70 है, तो सेम $100 will give you 7,000 INR. Okay, so this impact, this difference is because of a transaction exposure. So if there's a fluctuation in the exchange rate, the conversion of your exports value into INR gets impacted. Both the cases, situation A or B, there's no change in your exports. Export still remains $100. But when you convert that $100 to INR, that is getting impacted because of the fluctuation or the change in the exchange rate. Any doubt in transaction exposure? Multi transaction exposure. सर इसमें लॉस किसका होता है फिर एक्सचेंज रेट की वजह से? Both ways हो सकता है. So for example, अगर exchange rate $1 से 50 से 40 हो जाता है, अगर 40 INR हो जाता है वो, तो आपका लॉस होगा. क्योंकि आपको पहले सिचुएशन में 5,000 रुपये मिलते, अब आपको ये ओनली रिसीविंग 4,000 रुपीज. मतलब सर जितना बढ़ेगा उतना हमारा फायदा है. ऐसे नहीं है बढ़ेगा फायदा है. सो अगर इंपोर्ट साइड होता तो इंपोर्ट साइड में रिवर्स हो जाता, बढ़ेगा तो नुकसान हो जाएगा. सो इट नीड टू लुक एट दी position whether you are an export or import side, and that what then increase in currency or decrease in currency, which is depreciate will have either have a positive or negative impact. Okay. हेलो सर. या फजलू, बट अगर वही फॉरवर्ड रेट के एग्रीमेंट ही कर ले फॉरवर्ड रेट पर ही, ये अगर 3 इनवॉइस डेट अगर 3 महीने के बाद पे करना या आएगा फॉरवर्ड रेट पर, मेरा इस रेट पर ही एक्सचेंज रेट हो जाए, तो बढ़े या घटे
इंक्रीज हो, एक्सचेंज रेट बढ़े या घटे, उससे तो उससे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा उसको। करेक्ट, आते हैं उस पे, वो हेजिंग पे आते हैं। Any doubt in this first transaction exposure? Last time, any doubt in this? Okay. Next is translation exposure. पढ़ लीजिए एक बार आप translation exposure क्या before I explain. Read the explanation which is mentioned here. हेलो सर। हाँ, अच्छा सर, क्या? ये डायरेक्ट कोट, हेलो, Go ahead. ये डायरेक्ट कोट और इनडायरेक्ट कोट कैसे करते हैं सर इसका, इसमें? कहाँ लिखा है यहाँ पे? हम्म? कहाँ लिखा है यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट? नहीं, इसमें नहीं। एक्सचेंज रेट में डायरेक्ट कोट, एक्सचेंज रेट का जैसे करना हो तो बताते हैं, पहले इसको खत्म करने तो बताते हैं। ट्रांसलेशन में पढ़ लिया आपने, सो व्हाट इज माय ट्रांसलेशन एक्सपोजर? सो लेट्स अज्यूम there's a parent company, वो इंडिया में है, and then we have a subsidiary company, let's assume वो यूएस में है। सब्सिडी कंपनी का लेट्स अज्यूम बैलेंस शीट $100 है, और पेरेंट कंपनी का बैलेंस शीट 1000 INR है। ना इसका कंसोलिडेशन होगा, ठीक है। सो कंसोलिडेशन मींस जो सब्सिडियरी कंपनी है उसकी बैलेंस शीट आके मर्ज होगी पेरेंट कंपनी में। सो अगेन अगर एक्सचेंज रेट $1.50 है, सो दिस $100 विल मीन व्हाट? विल मीन 5000 INR ऐड हो जाएगा। और ये अगर एक्सचेंज रेट $1.70 है तो 7000 INR ऐड हो जाएगा। व्हिच मींस अगर आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट देखोगे, so the consolidated balance sheet either could be 1000, so 6000 rupees, which is 1000 plus 5000, or could be 8000 rupees. Now दोनों केस में the actual value of the asset is not changing. It's just because of your currency exchange rate movement, the value at the consolidation gets impacted, and hence your overall size of the balance sheet is getting impacted. This is called as translation exposure. This translation exposure, if mark to market ही mention करेंगे इसमें, because book value पे जब आपने रखा था उसको, probably 50 INR USD was the exchange rate. Now this next year it is going to be 60. Then we'll have to account the asset for 60. Or the same way, conservative said that if it is going down, then we will account the loss, and if it is going up, we will not account the profit. A sort of virtual asset increase हो रहा है, which actually we have not liquidated. So this is probably will give an impact. Yes, please. Yeah, so this is your
on the day of the consolidation. So depending upon which accounting provision you are following, okay, but most of the accounting provisions will require. So let's assume if you're consolidating at the end of the year, so at the end of the year you take a benchmark exchange rate and you convert that. So उसकी वजह से यहाँ आपका MTM create होगा, but the MTM will not get impacted on a daily basis. The next reassessment of that MTM would be at the next consolidation date. तब तक वो वही बुक वैल्यू वो उसी प्राइस उसी वैल्यू पे बुक्स में दिखेगा जो लास्ट रिपोर्टिंग ईयर में आपने देखा. No, that's okay. I'm considering year end. हाँ तो उस पे The वो delta उसी value change of 10 rupees. या उसी Asset पे दिखेगा. overstate होगा, which is actually not. करेक्ट ओवरस्टेट भी हो सकता है, अंडरस्टेट भी हो सकता हाँ, means understate. I'm saying that overstating होगा, then that equation of asset is equal to liability plus equity. Equity surely it will increase. कहाँ लेके जाएंगे उसको? Overstating the asset. है. दोनों इंक्रीज हो जाएगा ना. Why only one side will increase? Because both asset and liability, I'm converting in the same exchange rate. So there will be no impact from an accounting perspective. Any other question in translation exposure? Okay. So I in have case, yeah. कि इट इज सो नेचुरल कि आप जब कन्वर्जन करेंगे किसी मतलब करेंसी में तो देयर वुड बी सम इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू. तो इससे हमारा फोरकास्टिंग पे क्या इम्पैक्ट आएगा? The impact would be either positive. So if the exchange rate is moving in your favor, then of course it will create a positive impact because the size of the balance sheet will go up. If the exchange rate is moving against you, then your size of the balance sheet will shrink, which shows a smaller balance sheet. बट उसमें मतलब मैनेजमेंट को तो नॉलेज है कि दिस इज ड्यू टू एक्सचेंज रेट्स. मतलब मेरे को उसका रेलेवेंस समझ में नहीं आ रहा है, कनेक्ट नहीं हो रहा है. नहीं मैं क्वेश्चन नहीं समझा. सो रेलेवेंस मींस यू फर्स्ट आस्क कि इम्पैक्ट क्या है और वो इम्पैक्ट यस, नहीं कोई फोरकास्टिंग में कोई हाउ इट विल बी इम्पैक्टेड. बिकॉज द इम्पैक्ट इन द फोरकास्टिंग इज अगर आप एक फोरकास्ट करके बता रहे हैं कि इस कंपनी के एसेट साइज की वैल्यू जैसे ये है. सो सिचुएशन ए में आप फोरकास्ट कर रहे हो कि कंपनी का जो एसेट की वैल्यू है, टोटल एसेट की वैल्यू 6,000 रुपीज होगी. सेकंड केस में आप फोकस कर रहे हो कंपनी की एसेट की जो वैल्यू है 8,000 INR होगी. तो ये इज दिस नॉट रेलेवेंट बिकॉज आपके साइज ऑफ दी जो एसेट है वो चेंज हो रहा है इन नॉट इन रियल टर्म बट इन टर्म्स ऑफ द वैल्यू व्हेन इट गेट्स कन्वर्टेड फ्रॉम फॉरेन करेंसी टू INR. ओके, तो वो डिस्क्लोज नहीं अच्छा तो इंटरनली होती है रिपोर्ट. ठीक है. आप डिस्क्लोज करते हो, आप नीचे लिखते हो कि ये जो चेंज है ये चेंज प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज रेट है. तो मैनेजमेंट उसको डिस्काउंट करता है, मैनेजमेंट उसको फिर कंसिडर करता है. ओके 6,000 से 8,000 इज नॉट कि हमारी बैलेंस शीट इंक्रीज होगी. दिस इज जस्ट योर exchange rate has moved in your favor. That is why your balance sheet is showing bigger in this year vis-a-vis the previous year. ओके, तो ये टर्म्स आर यूज्ड लाइक ट्रांसलेशन एक्सपोजर एंड Yeah, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर्स. yeah. ओके. Any other question on translation exposure?
Okay. The next is economic exposure. Now, what do you mean by economic exposure? So economic exposure is where the client for whom you're doing forecasting or analysis is not directly doing any import or export, nor there is any consolidation involved. Okay? So there is no export import, so transaction exposure is not there. There is no conversion of an asset or liability, hence there is no translation exposure. But still, that company is exposed to exchange rate indirectly. For example, just say, let's take your case. Do you import export? The answer is no. You don't import export. Let's assume you don't import export anything. ठीक है, आप कोई कंसोलिडेशन भी नहीं कर रहे हो, आपके ओवरसीज कोई एसेट या लायबिलिटी भी नहीं है, सो आप एक को वो भी ट्रांसलेशन एक्सपोजर भी नहीं है. बट आर यू गेटिंग इम्पैक्टेड बाय द एक्सचेंज रेट? So the one of the common example could be the crude oil, correct? So if internationally, because India import oil, so अगर exchange rate movement होता है, so which will have impact on Indian government pricing of the import for the oil, और वो प्राइसिंग इम्पैक्ट फिर कस्टमर्स को पास ऑन करते हैं, सो वो हमें आएगा. सो देन व्हेन यू गो एंड परचेज फ्यूल फॉर योर व्हीकल्स, then of course you will get an impact, though your payment impact would be in INR only, but still it gives you some kind of an impact indirectly, and that's what is called as economic exposure. जो indirect impact पड़ता है exchange rate से कंपनी को, उसको economic exposure बोलते हैं. Any questions on this slide? Translation, transaction, economic exposure. Okay, so in case no questions on this, now this is what Fazlul mentioned earlier. So these foreign exchange impact can be eliminated through hedging, and there are different hedging options available to forward options and swaps. So depending upon, so I will not get into those derivatives right now because that's not the part of this journey. But अगर आपको interest है तो हम अलग से बात कर सकते हैं, ठीक है? But in summary, what it means, that you are exposed to the exchange rate risk. There are alternatives, very much similar to kind of an insurance, to protect yourself or to probably reduce or eliminate the impact of this exchange rate. So if as an organization you are willing to do that, you're willing to pay the cost, you're willing to bear the associated risk, then of course you have means through which you can manage these exposures. जो risk हमने discuss करे, ठीक है, इसको hedging बोलते हैं. So from modeling perspective, how does it help? So let's assume if the company, आप historically देख रहे हो कि company अपने आप को hedge करती हुई आ रही है, so then you will not try and focus too much on the forex impact, because if you're seeing a historical pattern that company always hedges themselves or keep themselves hedged, so you will use the same pattern and say okay, company को forex impact नहीं होगा because उन्होंने hedge किया हुआ है.
ठीक है. We don't need to get into this company कैसे hedge करती है, because that's not something which is a part of the modeling piece. ठीक है. But अगर वैसे आपको इंटरेस्ट हो तो we can talk about in terms of derivative structures, but modeling का part नहीं है. ये हमने डिस्कस कर लिया है जो फॉरेक्स इम्पैक्ट है, which sorry, एक बार देख लीजिए. Forecasting profit and loss on account of transaction exposure is impossible. Since the exchange rate fluctuation can be in either profit or loss, it not necessary कि किस साइड पे जाएगा वो. ठीक है. ट्रांसलेशन एक्सपोजर भी सेम है. So how do we forecast then the forex impact? What we do? So we generally try and take the central bank estimates of that particular country. So for example, अगर हम इंडिया की बात करें, so इंडिया में RBI regularly exchange rates estimates publish करता है. ठीक है. Now we take that कि let's say if RBI कह रहा है कि they are expecting exchange rate to be moving in this direction in the future. ठीक है. We take that and say okay, उस exchange rate से then you say okay, if the central bank is saying around this exchange rate, ये exchange rate यहाँ पे आसपास move करेगा, so then you take that as a benchmark. अगर उसको आप देखते हो कि आप उसको यूज करके आप अपना कन्वर्जन करते हो या ट्रांजेक्शन को कन्वर्ट करते हो एक्सपोर्ट इंपोर्ट को. कोई डाउट इसमें? The other way is ये बहुत रेयर करते हैं हम लोग. सो इज कि आपके पास एक इकोनॉमिक रिसर्च टीम भी है. ठीक है. सिर्फ इकोनॉमिक रिसर्च टीम इकोनॉमी एनालिसिस कर रही है एंड द रिसर्च टीम इटसेल्फ फोरकास्ट करती है, और वो खुद करेंसी का फोरकास्ट करती है पहले, और फिर उस करेंसी फोरकास्ट को जो फाइनेंशियल एनालिस्ट टीम है उस वो यूज करके एक्सचेंज रेट को यूज कर फोरकास्टेड एक्सचेंज रेट को यूज करके कंपनी एनालिसिस में लेके आती है. ठीक है. ये रेयर होता है काफी, बट दैट्स आल्सो सम ऑफ द that's also possible situation that we use. ये दो methods के through we use this forex impact into the modeling. Any questions? हेलो Yes, Subhash. सर, हैज के बारे में कुछ और इक्वेशन दे सकते हैं, बता सकते हो? किसके बारे में? हैज हैज अभी जैसे कंपनी हैज करती है ना, उसका कुछ और भी कुछ डिक्लेरेशन दे सकते हैं, स्टेटमेंट कुछ एक्स्ट्रा उससे और विषय हो सकता है. So hedges, you are trying to hedge का मतलब होता है you are trying to manage your risk. So for example, you purchase a new car and you got that car insured. That is also a hedge. Because what you've done, because you purchased a new car and you've got it insured, what you've done that any damage, let's assume because of either theft or because of any accident or stuff like this, you are protecting yourself against any financial loss. So that insurance is giving you what? Is giving you protection against that exposure. So that is hedge. The hedge means any strategy that you create through which you are able to manage your risk is called as hedge. Any other question?
ठीक है. So minority interest. What is minority interest? Anji, what's your understanding of a concept called minority interest? क्या होता है ये? Investment in a company less than 50%. It's 50%. Hmm. Anybody else? अगर किसी कंपनी में स्टेक हमारा 50% से कम है तो वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट है हमारा. अच्छा, तो मेरा किसी कंपनी में अगर 49% है तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो गया. सर अगर वो हमारी सब्सिडियरी नहीं है तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट है. अच्छा, ठीक ठीक है. Sanji, anybody else? Any other view? Anybody who agrees to this, disagrees to this, want to add anything to this? What is minority interest? सर एक कंपनी दूसरी कंपनी में जब ये स्टेक होल्डर रहता है ना, उसी को कहते हैं. उसको माइनॉरिटी कहते हैं. जब एक कंपनी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करती है तो उसको माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोलते हैं. एज ए प्रेफरेंस. Okay. Any other view? You've given the example on the last class on company A and B, जहाँ पर you have mentioned that 30% is an associate and greater than 50% is in subsidiary. So what is that? I'm just recalling that question yesterday. But is in the end of the session we can do that. हाँ ठीक है, अभी माइनॉरिटी इंटरेस्ट के बाद बता देता हूँ. माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या है? Something related to stakeholding in that company, but to what extent, what percentage, cannot say, but there is some stakeholder holding in that one company of other. ठीक है. Anybody else last time? Minority interest. Okay. So minority interest is when you hold an investment or a stake, but that stake is not good enough to influence the decision making of the company. So then it is called as minority interest because you're in What is minority. that percentage which affects the any influence in that company? There's no mathematical fixed number to this. Okay. So you need to understand in a contextual or in a relative context. So for example, आपका कंपनी में अगर लेट्स अज्यूम 20% स्टेक है और किसी दूसरे के पास 80% स्टेक है, ठीक है, तो then you're in a minority interest because you will not be able to influence any decision making because the other person who's holding 80% doesn't help. It doesn't give you any kind of an ability to influence any decision making, in spite of the fact you might be holding 20%.
and if I extend this, let's say we hold 49%, and the other stakeholder holds 51%, still same rule applies. In spite of the fact you hold 49%, it doesn't give you ability to influence the decision making of the company. Okay, so let's take But another it scenario. depends upon how many stakeholders are there. ये दो ही stakeholders लिए ना मैंने यहाँ पे. अब जो scenario ले रहा हूँ मैं, so let's assume stakeholder A holds 40%, stakeholder B holds 40%, and you hold 20%. Now, are you in a minority interest? The answer is no. Because जो 40-40 है, वो इंडिविजुअली कोई सफिशिएंट नहीं है डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करने के लिए. तो आपके पास जो 20 है, आप ए के साथ अटैच होते हो या बी के साथ अटैच होते हो, जैसे ही आप वो डिसीजन लोगे, आप डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दोगे. ठीक है, सो दैट इज द कॉन्टेक्स्ट दैट यू नीड टू लुक एट. मैं अकाउंटिंग लॉस के हिसाब से नहीं समझा रहा हूँ. आई एम प्योरली डूइंग फ्रॉम मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव, because that's what we're doing from a modeling perspective. Accounting norm में कुछ countries में वही 20%, 30% जो associate वाला definition है, वही जो भी दीपक पूछे जो मैं बताऊंगा, उसी context को extend कर दिया जाता है. ठीक है, तो वो अपना काम नहीं है यहाँ पे. Okay. So what we're looking at from management perspective, what they call as a minority interest, कि आपके पास stake है, but आप वो decision making को influence कर पाते हो कि नहीं कर पाते. अगर आपके पास वो decision making को influence करने की capacity है, so then I don't treat you like a minority interest. But if you cannot influence in any capacity my decision making powers, then you're nobody for me, and then you are a minority interest. Another scenario. So let's assume A and B, each of these has 40% stake, and you hold 20%. Okay, and you are confident. So A holds 40%, and A is confident that B will vote in his favor. So A is sure that the B will come along with A, so which means 40-40-80 हो जाएगा. In that case, the person holding 20% C becomes a minority interest, because जैसे ही B उसके फेवर में वोट कर देगा, उसके बाद किसी और की वोटिंग की जरूरत नहीं है, and the remaining will fall into minority state. कोई doubt? I have a question. Some companies send their shareholders like right to vote. So they are still the part of minority because they are not holding the major shares. नहीं, right to vote तो आपको इसलिए मिलता है because you are shareholder of the company. Right to vote is not based on your stake, whether you hold a minority or a majority stake. Even if you hold one share out of 1 crore shares, still you will get voting right now, right to vote. But the decision making, the influence on decision making, would there be impact? Yeah, correct. So let's assume if you got a voting right, and whether you vote yes or whether you vote no, that is not going to make any difference to anyone, then you are in a minority interest. But if your decision is going to make any impact, and or probably your voting has an ability to influence the decision, then we can say that you're not in the minority. Okay. Any questions on this? Okay. Now,
गोइंग टू एसोसिएट्स जो दीपक पूछा था, एसोसिएट्स वाला हमने क्या डिस्कस किया था? सो एसोसिएट वाला इज व्हाट वी डिस्कस्ड. So if you hold more than 50%, then you become a subsidiary, or you become a parent, and the company in which you hold the stake becomes a subsidiary company. But if you're holding anything less than that, be it a 5%, be it a 20%, be it a 40%, then all this put into category is called an associate. Okay? And then irrespective you are irrespective you are a major influencer in that company. Yeah. So वो जो एसोसिएट वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो डिसीजन में इन्फ्लुएंसिंग कैपेसिटी हाँ या ना उसको यूज नहीं कर रहा था. वो सिर्फ ये देख रहा था कि आपका स्टेक कितना है, whether you qualify for a subsidiary or you don't qualify for a subsidiary. बस फुल स्टॉप. वो एक स्टेप आगे जाके ये नहीं देख रहा था whether you have an ability to influence the decision making or not. ठीक है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट वो एक स्टेप आगे जाके वो डिसीजन मेकिंग सो डिसीजन इन्फ्लुएंसिंग कैपेसिटी को देख रहा है. दैट इज द डिफरेंस. बट फ्रॉम अ मॉडलिंग पर्सपेक्टिव कोई डिफरेंस नहीं है. मॉडलिंग में वहां पे भी हमने यही फ्लो चार्ट फॉलो किया था कि सिग्निफिकेंट है, अगर नहीं तो हमने अप्रोक्सीमेट मेथड यूज किया था. ठीक है, अब अप्रोक्सीमेट मेथड क्या था? इन्वेस्टमेंट्स इनटू एक्सपेक्टेड रिटर्न. सेम यहीं पे भी वही है. अगर वो इन्फॉर्मेशन अगर वो सिग्निफिकेंट है तो डू यू हैव इन्फॉर्मेशन अवेलेबल? अगर नो, फिर से मैंने अप्रोक्सीमेट मेथड यूज किया. अगर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो मैं उसको फोरकास्ट करूंगा और उस फोरकास्ट से इनकम निकालूंगा. In that 30% stake है तो कंपनी बी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, वी हैव टू कंसिडर दैट आल्सो इन कंपनी ए. Means in that, actually I was not that present in that live class, so I have not find that whether we have transferred that to check the carry forward losses of company A. कैरी फॉरवर्ड लॉसेस कैरी फॉरवर्ड लॉसेस के लिए हमने किया था ना, वो मींस दैट कंपनी ए हैज अ कैरी फॉरवर्ड लॉस, कंपनी ए हैज अ स्टेक ऑफ 30% in B, and now B has some profit structure P&L. 30% after tax, before tax, do we have to consider the profit and all that? नहीं, after tax. It's a kind of a dividend ना. से कंपनी ने अगर आफ्टर टैक्स 100 रुपीज है तो वो 100 रुपीज अब सब टैक्स वगैरह पेमेंट हो गया, वो 100 रुपीज किसको बिलोंग करता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को. यस. सो अगर लेट्स अज्यूम आपका कंपनी में 30% स्टेक है तो 100 रुपए का 30% आपको बिलोंग करता है ना, चाहे कंपनी डिक्लेयर करे चाहे नहीं करे. That's what I want to ask you, whether we will account that 30% profit loss, whatever it is, in our, and after that we will evaluate the any final losses and gains in our balance sheet. अगर आप सब्सिडरी, अगर आप पेरेंट कंपनी नहीं हो और आप सिर्फ एसोसिएट टाइप्स हो तो आप सिर्फ उसके 30% के अपनी इनकम पीएनएल में दिखा सकते हो, बस खत्म. बट अगर आप 50% से ज्यादा होल्ड करते हो तो आप अपनी बैलेंस शीट में भी कंसोलिडेट कर सकते हो. ये डिफरेंस है बिटवीन कंसोलिडेशन ऑफ अ सब्सिडरी और इनकम फ्रॉम एसोसिएट में. Because in that, I have a doubt, sir. रुक जाओ श्रीकांत. हाँ दीपक. Because in that I have not find that whether we have considered probably that B का जो gain or loss है, if it is in this total profit and loss, it's we have shown, I can recall the figure as 80 rupees is profit and loss. If it has already been accounted, then it's okay. Because I have not seen that. That's my query. That seen what?
कि हमने वो अकाउंट किया है नहीं किया 30% प्रॉफिट और लॉस। सो अगर मेरा पैट 100 है, और लेट्स से दिस इज कंपनी B Limited, and in this A holds 30% stake and C holds 70% stake. अब A में मैं इस 100 रुपीज का 30 रुपीज प्रॉफिट दिखाऊंगा सिर्फ P&L में। यहाँ तक कोई डाउट दीपक? Yes, because this 30% I was not able to recall in that video. That's what my question is. ठीक है, We अभी have समझ आ already गया, अभी समझ आ गया। उस वीडियो मुझे याद नहीं है सो उसमें कहाँ पे क्या था, सो वो रादर देन गोइंग इनटू दैट बोला था, कहाँ लिखा था। अभी क्लियर है कि 100 रुपीज अगर आपका पैट है, नाउ दिस 100 रुपीज बिलोंग्स टू शेयर होल्डर्स। लेट्स अज्यूम 100 रुपीज में से कंपनी ने कुछ डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, तो वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी इनकम में आ ही जाएगा, तो उसका तो कोई डिस्कशन ही नहीं है, बिकॉज कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो वो आपकी किटी में आ ही गया। ठीक है, वो आपके फिर P&L में ना आके आपके कैश फ्लो में आएगा। ठीक है, बट लेट्स अज्यूम कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया, तो 30 रुपए भी तो आप ही का है। ठीक है, means we have to see their financials after that, because अगर वो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर रहा है, still it's yours, whether it's a 30% loss or 30% profit. तो उसका बैलेंस शीट फाइनल होने के बाद आप हम करेंगे कि कैसे? मींस आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट एस्पेक्ट। ओके, फाइनलाइज हो जाने के बाद ही करेंगे, तभी तो हमने डिस्कस किया था कि अगर उसके फाइनलाइज होने के बाद करते हैं, उसी के लिए हमने डिस्कस किया था कि अगर मैं उस कंपनी का भी फोरकास्टिंग फिर मुझे ही करना पड़ेगा, और अगर वो कंपनी का इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो हम अप्रोक्सीमेट मेथड यूज करते हैं कि अच्छा अप्रोक्सीमेट मेथड मतलब इसका इतना प्रॉफिट होगा तो इतना 30% मुझे मिल जाएगा। अदर मेथड इज क्या, वो उस कंपनी का भी पूरा P&L दोबारा फोरकास्ट करे और फिर उसका 30% आप लेके आए। यही इस स्लाइड पे भी यही लिखा हुआ है ना यहाँ पे, कि अगर आपके पास वो इन्फॉर्मेशन इतनी मटेरियल है और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल भी है, तो आप उस कंपनी का भी फोरकास्ट करो बैठ के। No, we have assumed that 30 rupees is the gain, or for example, based on the forecasted figures. Now the figure comes as 20 after signed financials, and ours has also been done. Then again we have to how to evaluate that aspect. हमने फोरकास्ट करके 30 रुपए ले लिया प्रॉफिट उसका। Now we have accounted, we have considered the final P&L based on that 30 rupees. Now we have evaluated our tax. Their final one is giving us 20 rupees profit. In that case, how to go about that? ये मुझे क्वेश्चन ही नहीं समझ आया, सो लेट मी प्लॉट दिस क्वेश्चन हियर। सो ए है who holds 30% in B। ठीक है, अब बोलो, सो ये बी का जो बीज पैट है 100 रुपीज है। अब बताओ क्या सिनेरियो क्रिएट करना है, बोलो। No, one thing is that कि हमको फोरकास्टेड पे जाना है। फॉर एग्जांपल 30 रुपीज उसका प्रॉफिट है, 30 रुपीज हमारा अकाउंट में हो जाएगा। बी का फोरकास्टेड पैट है। अब बोलो। Actual PAT is for example it goes to 80 after signed financials. Then उस डेल्टा को कैसे अकाउंट करेंगे? क्यों करना डेल्टा को काउंट? हम आपने तो इसको ज्यादा दिखा दिया ना। तो You have given तो ये अकाउंट थोड़ा बना रहे हैं हम, कोई प्रोविजन थोड़ा कर रहे हैं हम लोग, ये तो फोरकास्ट कर रहे हैं। ऐसे तो मैंने अगर बहुत सारी सेल्स का लेता है, चलो मैंने फोरकास्ट किया अगले साल 300 रुपए होगा सेल्स, मैंने फोरकास्ट कर दिया,
अब एक्चुअल सेल 200 रुपए हो गया, तो क्या मैं उसको कहीं पे जाके काउंट करूंगा क्या 100 रुपए को? दैट इज व्हाट द फोरकास्टिंग इज करेक्ट। वो एज ए एनालिस्ट मेरा गलती हो गया, मेरा शेयर प्राइस का जो वैल्यूएशन होगी वो गलत आएगी, बट ये कोई अकाउंटिंग थोड़ा कर रहे हैं हम कि मैंने प्रोविजन क्रिएट करा 100 रुपए का और वो प्रोविजन में मेरा बेड डेट सिर्फ 80 रुपए का हुआ तो 20 रुपए मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। हम किसी भी आइटम में वैसा नहीं कर रहे ना दीपक, ना हम सेल्स में कर रहे, ना हम डेप्रिसिएशन में कर रहे, ना हम डेट में कर रहे। अगर हमारा कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है, वो मेरी फोरकास्टिंग और मॉडलिंग की एरर है या मेरी वो इनएक्सपर्टीज है, वो है। बट हम कहीं पे भी जाके प्लस और माइनस तो ना कर रहे हैं, तो अगर हम वहां नहीं कर रहे तो इसमें क्यों क्वेश्चन आ रहा है? बताओ। सो लेट्स अज्यूम मैंने सेल्स फोरकास्ट किया फॉर 2022 100 रुपीज। 2022 की एक्चुअल सेल्स फॉर एग्जाम्पल आप ले रहे हो 70 आती है, ठीक है। अब क्या करना है हमें? इस 30 को कहाँ प्लस और माइनस करो कहीं पे? My question is not that. My question is मेरा that क्वेश्चन, you have अरे रुको ना, considered. मेरे पहले सेल्स पे आंसर करते हैं, बिकॉज सेल्स हम कर कर आ गए, फिर मैं उस पे आऊंगा प्रॉफिट पे जो आप पूछ रहे हो। तो ये मेरे को ये बताओ, इसको कैसे ट्रीट करेंगे? No, the actual will whatever will happen in actual, it will happen in actual forecasted figures. उसका फोरकास्टिंग पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा ना? No, no, it will not come. सेम चीज यहाँ पे भी है। हम My फोरकास्टिंग, question is, for example, December end, we are preparing an IFRS balance sheet for both the companies. We have taken the forecast of company B, and now we are finalizing our financials for December. And if because उसके financials signed होने के बाद हम account करें कि what is that? नहीं मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। आप कौन सा पूछना चाह रहे हो? आप आईएफआरएस पूछ रहे हो, आप मॉडलिंग पूछ रहे हो, दो अलग अलग चीजें हैं। आप मुझे थोड़ा स्पेसिफिक पूछो, मैं फिर उस सिनेरियो को प्लॉट करता हूँ। आप मॉडलिंग पूछो, आईएफआरएस को भी साइड रखो। आप मॉडलिंग का पहला क्वेश्चन क्लियर करो, बिकॉज लेट्स गेट दैट। Modeling is clear to me. Modeling is clear to me. अच्छा, Or आप for आईएफआरएस का forecasting, पूछो फिर। forecasting is based on some aspects and all that. ठीक, आईएफआरएस का Based बोलो। on your historical assumptions or future thought process, whatever it is, it cannot match 100% with actuals. तो बोलो आईएफआरएस का डाउट बोलो। सो दिसंबर मींस जब हम फोकस कर चुके हैं नहीं 2022 का दिसंबर लूं कि 21 का दिसंबर लूं? 2020 for example, आपने 19 में you have done an investment of 30% in company B. 19 में, हाँ, 2019 में 2019 में 30%। हाँ, उसका पैट आपने अकाउंट कर लिया कि that 30% उसका हमारा 30 रुपीज हमने प्रॉफिट अकाउंट कर लिया उसका। नाउ बेस्ड ऑन दैट 30 रुपीज, एक मिनट 2019 में मैं अकाउंट क्या कर चुका हूँ? पैट नहीं, मैं 2019 में पैट अकाउंट नहीं कराऊंगा मैंने। अगर मैं आईएफआरएस के हिसाब से अब जा रहे हो, मॉडलिंग की बात नहीं कर रहे हो, तो 2019 में मैं वो काउंट करूंगा जो डिविडेंड मुझे मिलेगा, पैट नहीं काउंट करूंगा मैं। ओके, आईएफआरएस सेज कि डिविडेंड मिलेगा तो रिकॉर्ड करो। ओके। अगर एक कंपनी ने 100 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा हो, मुझे कोई डिविडेंड नहीं दे रही, तो उसको मैं कैसे अपनी इनकम मान लूंगा? बट आपका स्टेक तो है उसमें। तो स्टेक से क्या होता है? आज रिलायंस में आपने 2% स्टेक होल्ड किया हुआ है, तो रिलायंस ने जितना प्रॉफिट कमाया आप उसको अपनी इनकम टैक्स में लेके आते हो क्या? जितना वो डिविडेंड आपको देता है उतना इनकम टैक्स में लेके आते हो ना? तो क्या आप अकाउंटिंग नॉर्म्स की बात कर रहे हो, इसलिए मैं अकाउंटिंग साइड बात कर रहा हूँ। यस, आप उतना ही रिपोर्ट करते हो। एक और एग्जांपल लेते हैं। आप अपनी कंपनी के एम्प्लॉय हो और आपकी कंपनी ने बहुत प्रॉफिट कमा लिया, जितना बोनस वो आपको देती है उतना ही अपने इनकम टैक्स में लेके आते हो, या सारा का सारा जितना भी है वो लेके आ जाते हो? जितना कंपनी ने आपको दिया उतना लेके आते हो ना? यस। तो वैसा ही है, अगर आप अकाउंटिंग नॉर्म से जाओगे तो पैट नहीं आता। फिर जो कंपनी ने आपको डिविडेंड दिए
उस पोर्शन को रिकॉर्ड करोगे ना अपने अपना, क्योंकि कंपनी ने वो आपको दे दिया है। Okay. And now coming in 2020, if they still don't declare any dividend, we will not account anything. कुछ नहीं मिलेगा आपको। Okay. ठीक है, we can move forward. हेलो सर। हाँ, ये जो ए होल्ड्स 30% स्टेक कर रखा है कंपनी बी में, एंड सी होल्ड्स 70% स्टेक, तो ये दोनों माइनॉरिटी इंटरेस्ट में आएगा? नहीं, जो 70% होल्ड कर रहा है वो मेजॉरिटी स्टेक में आएगा ना। अच्छा सर, ये चार्ट एक बात देखना, चार्ट में थोड़ा सा चार्ट स्लाइड्स। हाँ यस सर। ये जो है, ये डायरेक्शन जो दिखा रहा है नो एंड यस, ये समझ में नहीं आ रहा है। दिस नो और दिस नो, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और ये सेकंड, कौन सा पूछ रहे थे? इन दोनों में ही अगर इसका ये डायरेक्शन नो क्या समझा रहा है, या क्या डिनोट कर रहा है? नो तो वही है ना, जो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट है उसी को एवरेज बना के लिया हुआ है। ये फॉर्मूले को, जो एसोसिएट वाला फॉर्मूला है वही देखो, ये फॉर्मूले से मत परेशान हो, ये अलग तरीके से लिखा। जो एसोसिएट वाला में हमने किया है एवरेज प्रॉफिट इनटू माय स्टेक, वही है। तो सर ये नो जो दिखा रहा है, तो हमें ये सिग्निफिकेंट अगर इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है तो हम ये फोरकास्ट नहीं करेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट का? नहीं करेंगे। यहाँ पर सिग्निफिकेंट क्या डिनोट कर रहा है? एक पेरेंट कंपनी या फिर? वो आपको डिसाइड करना है एज एनालिस्ट। कोई इसका ब्लैक एंड व्हाइट आंसर नहीं है कि 20% से ज्यादा होगा तो सिग्निफिकेंट है। ये सेम चीज हमने एसोसिएट में भी डिस्कस करी थी ना, कि वो एनालिस्ट को कॉल लेना होता है कि इज दिस इंफॉर्मेशन रिलेवेंट फॉर यू, डू यू थिंक इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ जाएगा कंपनी के परफॉर्मेंस में। क्लियर सर, क्लियर। Shrikant or somebody else was asking something when Deepak was discussing and told you hold on. Go ahead. If I was asking, but उसका डाउट क्लियर हो गया। वही था कि डिविडेंड हम लोग ऐड करते हैं एक्चुअली। ठीक है। Anything else? Last time, anything else? Okay, give me a second.
So, moving to next part, EPS and DPS. So, EPS is earning per share, and DPS is dividend per share. So, EPS represents your total earning per share, and EPS का formula is PAT minus preference dividend divided by number of outstanding shares होता है. ठीक है. So in case आपके पास आपके पास preference shares नहीं है तो then this is the formula. Otherwise the right formula is PAT minus preference dividend. How do we compute weighted average for the shares? एक example देख लेते हैं. So 1st April 2014 से अगर हम हेलो सर, आपका वॉइस नहीं आ रहा है. I think he is not there. बट माइक इज ऑन है फर्स्ट कॉल. उनका माइक ऑन है. अवे होंगे.
Hello. Hello. Hello, am I audible? Yes, sir. Yes. Yeah. I think there is some internet issue. I've dialed in through phone. So probably we'll have to call this close today. So because I can't be able to. I just called so that you guys don't keep on hanging and wasting your time. ठीक है, so ये slides हम continue करेंगे next class में. ठीक है, चलिए, thanks. Okay.